नमस्कार, मैं डॉक्टर चैतन्य ओक और हम देख रहे हैं हमारा चैनल क्रिटिकल केयर बेसिक्स। इसमें हम देख रहे हैं ECG ट्यूटोरियल्स एंड दिस इज द 25th ECG ट्यूटोरियल्स जहां हम देखेंगे एट्रियल एक्टोपिक्स। तो आइए देखते हैं एट्रियल प्रीमैच्योर कॉन्ट्रैक्शंस। एट्रियल एक्टोपिक अराइजेस ड्यू टू प्रीमैच्योर मतलब नॉर्मल साइनस बीट आने से पहले एक अलग फोकस जो साइनस नोड से हट के रहता है एट्रिया में, वहां से इंपल्स चालू होता है एंड वो क्या करता है, डीपोलराइज करता है, डिस्चार्ज फ्रॉम एन एक्टोपिक एट्रियल फोकस। यहां पे ये लैडर डायग्राम है जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज द नॉर्मल साइनस बीट। ये साइनस नोड से निकली, एट्रिया में फास्ट कंडक्शन हुआ, फिर एवी नोड में स्लो कंडक्शन हुआ जैसा कि नॉर्मली होता है, एंड देन वेंट्रिकल में फास्ट कंडक्शन हुआ। सेकंड बीट इज फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। एट्रिया साइनस नोड से बीट निकली, एट्रिया में नॉर्मल कंडक्शन हुआ एंड एवी नोड में थोड़ा सा डिले हुआ जिसके कारण जो पीआर इंटरवल है वो थोड़ी लंबी होगी। नॉर्मली 0.2 सेकंड्स या 5 स्मॉल स्पेस होती है, ये थोड़ी लंबी होगी। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। बाद में हम जब ब्लॉक डिस्कस करेंगे तब आएगा। एंड कंडक्शन इन वेंट्रिकल इज नॉर्मल। थर्ड जो वेव है अपनी, दिस इज द एट्रियल एक्टोपिक। यहां पे क्या हुआ, इंपल्स चालू हुआ एट्रिया से, वो ऊपर गया एस नोड की तरफ और नीचे भी आ गया। कंडक्शन टू द एवी नोड जो नॉर्मल डिले होता है वो हुआ एंड वेंट्रिकल में नॉर्मल कंडक्शन हुआ। सो यू कैन सी दिस डिफरेंट साइज पी वेव। ये जरूरी है कि इन्वर्टेड ही हो, सीधी हो सकती है, बट द शेप ऑफ पी वेव इज डिफरेंट देन द साइनस पी वेव। यहां पे एवी जंक्शन से एक्टोपिक चालू हुआ है और ऊपर भी गया नीचे भी गया, जो कि कंडक्शन वेंट्रिकल से फास्ट है इसलिए पहले क्यूआरएस आया, बाद में पी वेव आई। एंड लास्टली ये वेंट्रिकुलर एक्टोपिक है जो वेंट्रिकल से चालू हुआ तो बाद में ऊपर गया तो पी वेव नेचुरली बाद में, एंड वेंट्रिकल से क्योंकि चालू हुआ इसलिए क्यूआरएस इज वाइड। What is coupling interval? Coupling interval is defined as a distance between the onset of preceding sinus, ये preceding sinus QRS complex है, and QRS complex of the ectopic beat. ये ectopic beat है, तो पहले का preceding QRS जो बीट preceding sinus QRS है और जो अभी का QRS है उसमें का जो डिस्टेंस, अभी का मतलब ectopic beat वाला QRS है, उसका जो डिस्टेंस है that is called the coupling interval. Now this premature prime waves, ectopic impulse arises prematurely, that is in diastolic period of the preceding sinus wave and is thus recorded earlier than the anticipated next sinus wave. अभी देखो ये sinus wave आ गई, ये ectopic आ गया, फिर sinus, फिर ectopic. You can see that the P wave of ectopic beat is different shape P wave than the P wave of the sinus beat, right? So this is called as P prime या P dash wave. And यहाँ पे coupling interval हर ectopic में same है। ये coupling, ये coupling, ये coupling, ये coupling. So this coupling interval is fixed. Why? Because the impulses arising from the same focus, जो एट्रियल एक्टोपिक आ रहा है वो एक ही फोकस से आ रहा है, इसलिए जो एट्रियल पी प्राइम वेव है एट्रियल एक्टोपिक की वो भी एक सिमिलर शेप की है, राइट, हर जगह, एंड द कपलिंग इंटरवल इज फिक्स्ड। इंटरवल बिटवीन द एपीसी एंड द प्रीसीडिंग वेव टेंड्स टू बी सेम फॉर ऑल यूनिफोकल एपीसीज। एक ही जगह से एपीसीज आए, एट्रियल एक्टोपिक्स आए, इसलिए द कपलिंग इंटरवल इज फिक्स्ड। Now we will understand what is incomplete compensatory pause. This is the sinus beat. This is the sinus beat. APC occurs here. ये sinus beat है, यहाँ पे APC आ गया. You can see this P wave is different shape. This P wave is different. So these are the two sinus beats. और ये atrial ectopic की दूसरी P wave आई. The APC occurs earlier than the next sinus beat that was expected, and the sinus P wave is indicating ये sinus P wave and the atrial ectopic की P prime wave, the shape is different. ठीक है, नॉर्मली साइनस बीट आना चाहिए थी यहाँ,
but ये prematurely आ गई, पहले ही आ गई. Then what happens? The dash line shows where the next normal sinus beat would have been expected. ये dash line बताती है कि यहाँ sinus beat आना चाहिए थी, पर उसके पहले ectopic आ गई. However, ये sinus beat अभी नहीं आ पाएगी क्योंकि ये ectopic आने के कारण sinus node को उसने depolarize कर दिया. तो यहाँ जो normal sinus beat आना चाहिए थी, वो नहीं आ पाएगी. Then the next sinus beat और आगे आना चाहिए जिसके पहले आ गई, क्योंकि ये डिपोलराइज अभी डिपोलराइज हो गया था, उसके पहले ही साइनस बीट आ गई. द नेक्स्ट साइनस बीट ऑकर्स अर्लियर देन एक्सपेक्टेड. द डैश लाइन शोज वेयर द नेक्स्ट साइनस बीट वाज एक्सपेक्टेड शुड द एपीसी नॉट हैव ऑकर्ड. ये डैश लाइन बताती है कि अगर एपीसी नहीं आती तो साइनस बीट यहां आनी चाहिए थी, पर अभी जो नेक्स्ट साइनस बीट है यहां आ गई. द डिस्टेंस बिटवीन द एपीसी एंड दिस नॉर्मल बीट इज लॉन्गर देन 1 RR. ये जो एक्टोपिक बीट है, यहां से ये जो डिस्टेंस, दिस इज लॉन्गर देन द RR इंटरवल, राइट? एंड द इंटरवल बिटवीन द नॉर्मल बीट प्रायर टू एंड आफ्टर द एपीसी इज लेस देन 2 RR इंटरवल्स. मतलब एपीसी के पहले ये नॉर्मल बीट है और इसके बाद जो आती साइनस बीट ये नॉर्मल बीट है. दोनों का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉलर और लेसर देन डबल ऑफ द RR, right? So this is called as incomplete compensatory pause. This is different as from what happens in the ventricular ectopic. Atrial ectopic में ऐसा इसलिए होता है कि वो ectopic बीट जाके ऐसे नोड को रीसेट कर देती है. But this does not occur in the ventricular ectopic. For example, in ventricular premature beat, this is the RR interval, this is the ectopic beat. So ectopic beat के पहले की sinus beat और ectopic के बाद की sinus beat, ये जो interval है, that is exactly double the interval of RR, normal RR interval, right? So this is complete compensatory pause in ventricular ectopic, while in atrial ectopic it was incomplete compensatory pause. Ectopic आने के बाद उसका future क्या होता है? What happens to the abnormal beat which arises from the atria and not the sinus node? एक तो it could get conducted. It could get conducted with a normal PR, with a shorter PR और a longer PR. Depend करता है कि वो जो फोकस है एट्रिया में कहाँ है, कितना दूर है एवी नोड से, जिस पर डिपेंड करता है कि PR इंटरवल नॉर्मल रहेगी, शॉर्ट रहेगी, है? दूसरा, it could be blocked. अगर एट्रिया की जो प्रीमैच्योर एक्टोपिक बीट आई, वो जब एवी नोड में पहुंचती है, तब अगर एवी नोड इज रिफ्रैक्टरी और इन अ डीपोलराइज्ड स्टेट, दैट एब्नॉर्मल प्री प्राइम वेव विल नॉट बी कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल्स एंड इट विल बी ब्लॉक्ड. अगर ऐसा होता है तो जो टी वेव ऑफ द प्रीसीडिंग साइनस बीट में बी स्लाइटली नॉच्ड. जो पहले के साइनस बीट की जो टी वेव है उसी में पी वेव घुस जाएगी या पी प्राइम वेव घुस जाएगी. तो ये आपको स्पेसिफिकली देखना पड़ता है. इफ दिस इज मिस्ड देन आपको जो रिदम है उसको आप ऐसे ब्लॉक करके मिस डायग्नोस कर सकते हो. सो यू हैव टू बी केयरफुल हियर. एंड द बीट कुड बी कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल, but it could be conducted in a normal fashion or it could be conducted into an aberrant pathway, and most commonly it is RBBP pattern. हम RBBP देख चुके हैं. Now these are the examples. ये sinus P waves है, conducted, ये sinus rhythm आ गया. यहाँ पे block PACs, ये premature atrial beat है ना, and these have been blocked. ये आगे ventricular AV nodes आगे conduct नहीं हुआ. So these are called blocked premature atrial contractions. Now this is the sinus beat, sinus. This is the ectopic. This is the atrial ectopic. Again sinus beat, and this is the atrial ectopic. And see how the atrial ectopic is conducted. The sinus beat is conducted normally with a normal QRS, but the atrial ectopic is conducted into RBBB pattern. So RS R dash RS R prime pattern with T wave inversion, and in V6 you can see ST depression. This is typically what is seen in RBBB, S in V6 and RS R dash pattern in V1. So this is how RBBB looks. The atrial beat is conducted as a RBB pattern while the sinus beat is conducted normally.
That is called as aberrant या abnormal conduction. Now, if atrial beats come in a succession, लगातार दो atrial ectopic beats आए, तो that will be called as couplets. अगर तीन आए या ज्यादा आए, तो then that is called as atrial tachycardia. Normally 3 से 5 beat लगते हैं. तो यहाँ पे this is the sinus rhythm, and here comes the ectopic. Normal sinus rhythm के ये this is the T wave, this is P wave, और यहाँ sinus beat आना चाहिए थी, ये पहले ही आ गया atrial ectopic, right? And then suddenly this tachycardia started. So this is paroxysmal atrial tachycardia, right? APC में ट्रिगर atrial tachycardia और AF, है ना? यहाँ पे देखो साइनस बीट चल रही थी, यहाँ पे atrial ectopic आने से it has triggered atrial tachycardia, right? यहाँ पे फिर से atrial tachycardia खत्म हो गया और normal बीट चालू हो गया. So ये अचानक चालू हो रहा है, अचानक खत्म हो रहा है. That is what is called as paroxysmal, right? Here ये थोड़ा सा इतना क्लियर नहीं है, but the atrial ectopic sinus rhythm का atrial ectopic has given rise to precipitated atrial fibrillation. Atrial ectopics, they can occur in patients with normal hearts or they can occur in patients with cardiovascular disease, and it is difficult to predict, difficult to establish a definite relationship. Idiopathic PACs means when the cause is not known is most common in patients without structural heart disease. Importantly, ये जो atrial ectopics हैं, they can sometimes degenerate to atrial fibrillation. These are the etiological factors or rather associations. For example, people taking tobacco or smoking, alcohol and coffee are more likely to have atrial ectopics. Obesity is a risk factor, as is reduced physical activity. 25 to 81% patients who have heart attack have atrial ectopics. In one study, there were about 9 to 14 ectopics on the first day, and over the 10th day of post-MI, they reduced to 1 to 2. Coronary artery disease, ischemic heart disease of any magnitude can cause atrial ectopics. और जब भी एट्रियम में प्रेशर बढ़ता है या वॉल्यूम स्ट्रेच बढ़ता है, तब ectopic आने की संभावना बढ़ जाती है. फॉर एग्जांपल इन माइट्रल स्टेनोसिस और हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी. लास्टली सम लंग डिसीजेस लाइक chronic obstructive pulmonary disease, स्पेशली जब अपन ब्रोंकोडायलिसिस यूज करते हैं. हाउ डू इवैल्यूएट, क्या करना है इसके लिए? 24 आवर होल्टर मॉनिटरिंग, जिससे पता चले कि बीच में atrial ectopic tachycardia तो नहीं हो रहा है या atrial fibrillation flutter तो नहीं हो रहा है. You can do echocardiography to rule out structural heart disease. What is most important is there is no indication of performing a EP study in a patient with atrial ectopics. How do we treat? क्या करना है? The presence of frequent ectopy should prompt a diagnostic evaluation to rule out a structural heart disease. Echocardiography करो, जरूरत पड़ी तो होल्टर मॉनिटरिंग करो. अगर ऐसा कुछ निकलता है तो specific therapy should be directed at the cause rather than the atrial ectopic. If they are asymptomatic and there is no structural heart disease, no treatment is required. For ongoing symptoms, symptomatic PACs, अगर आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताओ, ओबेसिटी तो उसको कम करो, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ, और स्मोकिंग, अल्कोहल कम करो, बंद करो, कैफीन कम करो. अगर उसके बाद भी PACs are symptomatic, then you can add a low dose beta blocker like metoprolol. For PACs that precipitate or act like triggers for important tachycardias like supraventricular tachycardia, atrial flutter, fibrillation, or atrial tachycardia, then you can use antiarrhythmic drugs like class 1A, class 1C like flecainide, class 1A like procainamide, class 1C like flecainide, and class 3 like amiodarone. These are the only two indications जब हम ablation के बारे में विचार कर सकते हैं in atrial ectopics. Number one,
when they're documented to trigger atrial fibrillation. दूसरा, when they induce atrial tachycardia causing cardiomyopathy due to frequent PACs, right? अगर ऐसा है तो pulmonary veins में this is the most common site of atrial ectopics, वहाँ आप जाके एब्लेट कर सकते हो, या जब आपको साइट मालूम नहीं है तब इलेक्ट्रोएनाटॉमिक मैपिंग करके you can ablate. Thank you. This was about the atrial ectopics. I hope you're liking these lectures. In next lecture, we'll consider the mechanism of arrhythmias and then we'll start with focal atrial tachycardia. Thanks a lot. Do subscribe and share.